जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन और एक नई वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ। यार, जैसा कि आपको पता है, आज है हमारी 27 तारीख और कल से हमारा एम्स का स्टेनो एग्जाम लगा हुआ है 28 फरवरी। और 1 मार्च को हमारा एम्स का स्टेनो का एग्जाम है। तो यार, मैं डालना नहीं चाह रहा था पहले वीडियो, फिर मुझे लगा यार एक डिक्टेशन तो प्रैक्टिस कर ही सकता है बच्चा। ठीक है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड डिक्टेशन एक मैंने डाली है। पूरा 1 घंटा लगा मुझे पूरा केसी खंगालने में। देखी सारी वॉल्यूम्स देखी। तब मुझे लगी यार, हाँ, ये हम कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट डिक्टेशन है। थोड़ी मॉडरेट टू हार्ड मैं कहूंगा डिक्टेशन को। बाकी देखते हैं आपको कैसे लगती है। ठीक है। एम्स स्टेनो 2026 के लिए लास्ट डिक्टेशन बिफोर एग्जाम। ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करें। और एक चीज पहले बता दूं, मैंने स्ट्रैटेजी की वीडियो हो गई और लास्ट मिनट टिप्स की वीडियो भी डाल दी है। उसको देख लेना, वो बहुत हेल्प करेगी एग्जाम से पहले आपको। ठीक है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर आप जब वीडियो एंड होगी आपको दिख जाएगी वो वीडियो। ठीक है। तो स्पीच ऑफ ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, ट्रांसक्रिप्शन नंबर 387 है। और ये देखो, इतना बड़ा लिखा भी रखा है इन्होंने, तो बहुत इंपॉर्टेंट डिक्टेशन है। तो बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं। द डिक्टेशन विल स्टार्ट इन 10 सेकेंड, सो बी रेडी। 5, 4, 3, 2, 1, start. Sir, a number of important developments have taken place after the close of the budget session of this parliament. 7 weeks have passed since the government took the difficult and even painful decision to devalue the rupee. I am keenly aware that there are some misgivings in the minds of some honorable members about this decision and about the economic policies of the government in general. That is why I am now taking this opportunity to share my thoughts with you, sir, and to benefit by the counsel and criticism of the honorable members on both sides of the house. I shall listen carefully to what honorable members have to say, and I hope I shall have an opportunity towards the end of the discussion to respond to the suggestions made and sentiments expressed in this august house. A supplement to the economic survey has been prepared and is being circulated to honorable members. Recent trends in the economy have been outlined in the supplement, and I do not intend to take much time of the House in going over the same ground. But I would like to recapitulate at the outset some of the salient developments in the Indian economy in recent years. Sir, when I presented the budget early this year, I had occasion to say that in many ways the year that was then drawing to a close had been a very difficult one. On the latest reckoning, agricultural production declined by nearly 15% in 1965-66. Industrial production increased by only 3%, and total national income in real terms declined by about 4%. It is not surprising that in the face of such a sharp reduction in real resources, prices increased by as much as 15% in 1 year, and exports declined marginally in spite of growing assistance to them. We had to tighten important restrictions further, even in respect of essential raw materials and components. In the meanwhile, our repayment obligations were rising steadily so that we had to borrow $187 million from the International Monetary Fund last April. In a sense, that difficulties that we have been experiencing of late began to gather momentum towards the middle of the third plan period. The rate of growth of the economy in the third plan was a very modest one.
During 1963, 1964, and again in 1964-65, there was a spurt in both industrial and agricultural production, and national income in real terms increased by nearly 13% in these 2 years. There were also signs towards the middle of the third plan period of a distinct improvement in the balance of payments, both as a result of the increase in exports and greater utilization of external aid. An unprecedented effort was made in the 1963-64 budget to raise additional resources to meet the challenge of defense and development, and efforts to mobilize additional resources were continued both during 1964-65 and 65-66. In the event, however, these efforts did not prove adequate to meet the additional demands arising from the expenditure on defense and development. Prices began to rise towards the middle of 1963, and the trend, which started then, has continued more or less uninterrupted till now. The increase in exports, which was witnessed during the first 3 years of the plan, could not be sustained, and both during 1964-65 and 65-66, our balance of payments remained under heavy pressure. Government responded to these mounting difficulties both by corrective measures in the short run as well as by long term measures designed to improve the basic health of the economy. At a time when production had actually fallen, the pressure of demand on the economy could not be reduced to any significant extent by additional mobilization of resources. Our immediate response to the difficult economic situation, therefore, was that both agriculture and industry should be as a matter of highest priority. Accelerated, it was only on the basis of an early increase in production that we could seek to solve our manifold problems in a constructive and forward looking manner. At the same time, every effort was made in the last budget to contain both plan and non plan expenditure so as to reduce the pressure on the economy. In the short run, we had to take steps to import food grains as well as to import more fertilizers and other raw materials essential for agriculture so as to give a decisive push to agricultural production in the current season. As I explained in my budget speech, it was the view of the government that despite the difficult foreign exchange situation, it would be self defeating to maintain the severity of our import restrictions. Stop. हो तो भाई आपकी डिक्टेशन हुई खत्म। मैंने इस बार डिक्टेशन बोली है थोड़ी तेज क्योंकि मुझे थोड़ी इजी सी लगी है। इजी टू मॉडरेट मैं इसका लेवल कहूंगा। थोड़े बहुत वर्ड है तो कॉम्प्लेक्स होंगे। वैसे जो प्रैक्टिस कर रहा है बच्चा लगातार इजी टू मॉडरेट कहूंगा। शुरू में मेरे को लगा मॉडरेट टू हार्ड होगी लेकिन ठीक थी ये डिक्टेशन। अच्छी डिक्टेशन है। ऐसा नहीं है कि ईजी है तो नहीं आएंगी। मैटर हमेशा ईजी आते हैं। ठीक है। मेन बच्चा जो फंसता है टाइपिंग वगैरह में टाइम वगैरह अपना प्लान वैन करने में उसको फंस जाता है। ठीक है। 7 मिनट 33 सेकंड में 840 वर्ड तो लगभग हम लेके चले 110 वर्ड पर मिनट से प्लस ही कहूंगा मैं। जो ये वाला पैसेज था वो हमने 3 मिनट 40 सेकंड के आसपास शायद हमने किया था।
तो इसकी भी स्पीड 105 से 107 कहूँगा। टोटल स्पीड मैं 110 प्लस कहूँगा, इसकी 110 वर्ड्स पर मिनट प्लस कहूँगा। 110 से 112 की स्पीड है, मैं डिक्टेशन मैंने बोली है ये। ठीक है, ये तेज डिक्टेशन इसलिए बोली है जिससे आपको एक प्रैक्टिस मिल जाए अच्छी। अगर जो 80 वर्ड्स पर मिनट वाला है ना, तो उसको लिए क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ उसको लिए क्या करना है। उसको ना स्पीड ये कम कर लेगा, जो ये 0.75x पे देख ले या 0.9x पे देख ले। ठीक है, जो 100 स्पीड लिखने वाले और 80 स्पीड लिखने वाले हैं, वो इतनी स्पीड कर लेंगे तो कम हो जाएगी स्पीड। ठीक है, तो मैंने तेज उसके लिए बोली है, जैसे बहुत सारे बच्चे 100 वर्ड्स पर मिनट वाले लिखते हैं, उनसे तेज लिखते हैं, तो उनके लिए मैंने तेज स्पीड बोली है। अगर आपकी कम स्पीड है तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। अब करना क्या है, रीड कर लो, मैं बताता हूँ यार, हर उसमें 10 मिनट रीड कर लो इसको। ठीक है, और इसको टाइप जरूर कर लेना, कोशिश करना 40 से 45 मिनट के अंडर से अंडर ही, 40 मिनट के अंदर ही आपकी टाइप हो जाए। ठीक है, इतनी स्पीड रखना। देन उसके बाद देख लेना कोई मिस्टेक्स वगैरह हो तो एरर कॉपी में मिस्टेक्स वगैरह लिख लेना और उस पर काम कर लेना। और एक बार ही मैं कहूँगा आपको, जितना ही मैटर है ना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, उसको एक बार रीड कर लेना एग्जाम से पहले। कोई लगे वर्ड जैसे माउंटिंग है कैसे बनेगा, या सप्लीमेंट हो गया, मिसगिविंग्स हो गया, जैसे अनप्रेसिडेंटेड हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बड़ा आता है, तो इनकी प्रैक्टिस एक बार अलग से कर लेना। ठीक है, तो भाई ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एंड अपने पे भरोसा रखना यार। ठीक है, आपने बहुत अच्छी मेहनत करी है, अपने पे भरोसा रखेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे तो भगवान भी साथ देते हैं। ठीक है, बाकी कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। और आपको बता दूं, लास्ट मिनट टिप्स की एक वीडियो बना दी है, उसको ज़रूर देख के जाना भाई, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी वो वीडियो आपकी। ट्रस्ट मी, कोई ऐसी फालतू की चीज़ नहीं डालता मैं यूट्यूब पे, सारा अच्छा कंटेंट होता है, तो आप एक बार वो देख लेना। जब वीडियो एंड हो रही होगी आपको दिख रही होगी। ठीक है, अभी दिख जाएगी आपको। तो भाई ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एम्स स्टेनो एग्जाम। लेट्स डू इट।